How conscience acts as a source of ethical guidance. First of all, what is conscience? Conscience क्या होता है? आपका जो inner voice होता है वो होता है conscience. Conscience refers to the inner voice of a person. There is a sense of moral right or wrong present in every person. हर person में morally, say you may not say it openly, but inside what is right, what is wrong, morally everyone knows. Everyone knows. Whenever a person makes a decision, executes an action, his inner voice tells him whether it is right or wrong. Okay. In most cases, this inner voice guides a person properly and ethically. तो यही inner voice guide करेगा आपका वो बिहेवियर कैसे होगा, राइट? सो हियर आपका जो मोरल चीज है, वो जो मोरल इनर वॉइस है, दैट विल गाइड यू. Thus, it is always advised that a person, before taking a decision or doing a decision or an action, should sit back, think about his or her decision in ethical terms. जब भी आप कोई काम कर रहे हो या फिर कोई एक्शन कर रहे हो या फिर डिसीजन ले रहे हो, you should think from an ethical point of view. Then whatever his or her inner voice tells him, it is ethically correct in most of the cases, not always, most of the cases. A person's intentions, decisions, actions and conduct are many times influenced by 3 से 4 चीज पे हमारा जो डिसीजन होता है या हमारा जो एक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि इंस्टिंक्ट, इनिशियल एक इंस्टिंक्ट आपको बोलता है कि विल आई गो फॉर इट, और एक डिसीजन में लूं या नहीं लूं, एक इंस्टिंक्ट के ऊपर बहुत काम करता है. टेम्पटेशन, यू गेट टेम्पटेड बाय समथिंग, यू गेट बहुत ही अच्छा आपको एक कहीं ना कहीं सैलरी मिल रहा है या फिर यू गेट टेम्पटेड बाय दैट मनी, राइट? इमोशनल बॉन्डिंग पे बहुत काम होता है. अगर आप किसी चीज पे आप ज्वाइन करना चाहते हो, वहां पे आपका कोई एक जान पहचान है, भाई है या बहन है, तो एक वो बॉन्डिंग भी आ जाते हैं टू टेक ए डिसीजन. ठीक है? या फिर कोई एक डिजायर है, एंड सो ऑन. लॉट ऑफ थिंग्स कम्स इनटू प्ले व्हेन यू टेक अ डिसीजन. ओके, सो conscience is always over and above all the above factors. It does not get influenced by them. तो ये जो चीज है, usually people have this to take a decision, but conscience जो होता है ये इससे ऊपर है. It is a person's choice whether to listen to these factors or to one's conscience. आप either these factor को listen करोगे या फिर conscience. Okay. One who listens to conscience is always likely to act ethically. See, not always, but likely to act ethically. But these factors shroud conscience and try to make the voice of conscience meek. It takes effort to clear them and amplify the voice of conscience. तो एक एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा. Suppose a poor person comes to a police station to lodge a complaint against a powerful politician. एक poor person आता है powerful politician के पास कंप्लेंट करने, अगेंस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन के बारे में वो करने जा रहा है पुलिस स्टेशन को. who has started mining in his or her 1 acre field without his consent. बिना कंसेंट लेके उसी के फील्ड पे वो पॉलिटिशियन माइनिंग चालू कर दिया. It is the only source of income to this poor farmer. Then same politician approaches the police inspector and offers him a hefty bribe. तो वो पॉलिटिशियन पुलिस इंस्पेक्टर को ब्राइब दे देता है. Offering a bribe makes it clear to police also that the land in which mining is done belongs to that poor farmer. तो obviously पुलिस को पता चल जाता है. पुलिस जब कोई ब्राइब देके आता है तो पुलिस का जो इनर वॉइस है, इनर कॉन्शियस है, वो बोलता है कि ओके दिस इज द रॉन्ग गाय, राइट? तो यहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शन है. ही कैन लुक अप टू 2 पॉइंटर्स फॉर डिसीजन. अभी ये पुलिस के ऊपर है, बिकॉज पुलिस इज ऑल्सो पब्लिक ऑफिसर. टेम्पटेशन टू एक्सेप्ट, एक टेम्पटेशन होता है क्योंकि ब्राइब बहुत मिल रहा है, उसको हेफ्टी ब्राइब मिल रहा है. नहीं तो कॉन्साइंस दैट सेज दैट द लैंड बिलोंग्स टू द पुअर मैन एंड एनी एक्शन अगेंस्ट हिम वुड tear his or her life apart. So 2 things he has, either one you have to do. In this case, the police officer should be clear of the temptation of the bribe first and then listen to the conscience to help the poor man. Following are the ways. तो अब ये कैसे करेगा? अब उसको 2 चीज डायलेमा हो रहा है कि मुझे पैसे भी चाहिए and also conscience बोल रहा है, तो either or you have to decide. So how this thing will happen? So यहाँ पे क्या होगा?
in which a person following are the ways in which a person ensures he listens to conscience. Don't make decisions in haste. Hasty decisions mat lo, jaldi mein decision mat lo. In haste, a person is likely to get influenced more by obvious temptations, but whenever a person thinks, temptation slowly get cleared and conscience becomes obvious. So agar aap sochoge, if you start thinking, slowly the temptation will slow down and your conscience will increase. Decide and review. A person has to make decision, and before making it public has to review after a day or two. In the meantime, a person gripped with temptation would have come out of it. See, decision जब आप ले लेते हो फिर उसके बाद review करो. Maybe in the review, when you are reviewing, maybe your decision can change. Okay. Write down the decision. It is said that writing would make one's thought process clear. Deciding or acting after writing down all the thoughts would increase the chances of listening to conscience. हमेशा ये चीज to my students also I tell कि I always tell when you do your targets, आप जब टारगेट बनाते हो टारगेट डेली लिख के रखो सुबह उठ के, बिकॉज व्हेन यू राइट कहीं ना कहीं आपका वो कॉन्सेंस काम पे आता है. इसलिए मैं बोलता हूँ व्हेन यू डू करंट अफेयर्स, व्हेन यू डू मिसलेनियस करंट अफेयर्स, राइटिंग बहुत काम आता है. मेंस राइटिंग जो होता है वो लिखो, अपना नोट्स खुद बनाओ. ओके सो कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है व्हेन यू राइट. ठीक है, जैसे कि सुबह के बैच में जो बच्चे आते हैं मैं उनको खुद कराता हूँ. लाइक दे शुड राइट, आई गाइड देम, आई टेल देम व्हाट टू डू बट दे राइट. वो बहुत डेवलप करता है एक आपकी मतलब यहाँ पे अगर कौन साइंस है तो यूपीएससी प्रिपरेशन में वो आपका माइंड क्लियर कर देता है. ओके दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ आई नीड टू राइट, दिस इज द current affairs, this is the forward linkage, this is the backward linkage, everything it becomes crystal clear for the aspirant. Okay, rather than reading. Some students what they do is simply read from the mobile. कोई भी दृष्टि या फिर बाइजू जो भी वो पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं. नो, वी रीड एंड देन राइट इन योर कॉपी. लिखने से आपका क्लैरिटी मिलती है, थॉट प्रोसेस क्लियर होता है. ओके, इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट ऑल्सो. फाइन. हैव ए रिलायबल कन्वर्सेशन पार्टनर. कन्वर्स मतलब आपके चीज में कुछ चल रहा है माइंड में, तो व्हेन यू हैव ए पार्टनर टू whom यू कैन शेयर, तो एंड ही शुड बी रिलायबल. तो कन्वर्सेशन बोल दिया, वो आपको अगर कुछ गलत आइडिया दे दिया तो फिर कुछ काम नहीं होगा. यू हैव टू बी वेरी रिलायबल एंड दैट गाय शुड बी वेरी क्लोज एंड trust factor should be there. Conversation partner is the one with whom a person converses often before deciding or acting. Such partners could also express doubts over the ethicality of decision and help you listen to your conscience. So it is very important in your life to have someone who is a reliable conversation partner. Very important. Okay, so all these things you have to write in the paper in your exam, one line. Okay, because every point are different to each other. Maintain small note about the decisions you have made and about which you do not have any regret. Think over the decisions when you are free. This strengthens your conscience and also your ability to recognize and hear the voice of conscience. कभी भी आप कोई डिसीजन लिए हो तो उसको स्मॉल नोट लिख के रखो, एंड अबाउट व्हिच यू डू नॉट हैव एनी रिग्रेट. तो जब आप फ्री में हो तो उसको थोड़ा यू स्टार्ट थिंकिंग ओवर इट सो दैट यू रिकॉग्नाइज योर कॉन्शियस. आहिस्ता आहिस्ता द कॉन्शियस विल डेवलप. See, these are the ways how to develop your conscience. How to develop your conscience.